Okay, good morning everyone. So in today's class, we'll be continuing the concept of conditional probability. I did talk about this conditional probability in my last class. So this was the last question which was given to you as your homework, if you can recall. A quick idea about conditional probability, just the formula in fact, P of A by B. This is given by P of A by B divided by P of B, wherein we are actually calculating the probability of A where the event B has already occurred. So this is known to me, or I can say this is given to me. So in this question 10th, let me focus on say A part. A black and red die are rolled. So basic idea is one need to understand this carefully. Generally, the question given as two dice are rolled together. So now dice are two, but the color is being also mentioned. You will realize it doesn't make any difference. Just that we will consider, say, the black is my first die and the red one is the second die. Then the question follows is find the conditional probability of obtaining a sum greater than 9. तो जो निकालनी है probability, that is my event A, sum is greater than 9. Given that, now what is given to me? ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5 और ब्लैक डाई देखो हमारा फर्स्ट डाई है, तो इसका मतलब हम यहाँ क्या लिखेंगे? ब्लैक डाई, और दैट इज बेसिकली फर्स्ट डाई दैट रिजल्ट्स इन 5. सर डाइस है ना वो दो। So based on this, we need basically to find P of A by B, which is given by the formula. We write it directly. Now let us focus on writing down the events. So what is sum greater than 9? So A will be sum greater than 9. Sum would be simply 10, 11 or 12. So sum 10. There are not many cases we need to mention. Then for 11 and 12, the sum 10 will mean simply 5, 5. Or in fact, I should begin with 4, 6, 6, 4, right? And then 5, 5, then followed by sum as 11. 11 is 5, 6 or 6, 5. And sum 12 means 6, 6. Any case which is left out, please check it out. Similarly, B, black die or the first result in 5. So that was simply 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6. Now, what is their intersection? One can easily observe common to both of them is one I could see 5, 5, then I could see 5, 6. Is there anything which is common? No. So intersection of them is 5, 5 and 5, 6. So that now coming to P of A intersection B. A intersection B contain two elements out of possible. In case of this, there will be 36 cases. And what is P of B? B contains 1, 2, 3, 4, 5, 6 elements. So 2 by 6, 1 by 3, which is your required answer.
Do recall in the last class, I did also talk about a very simple method wherein you can directly get the answer logically without solving anything. You just need to write B and you will have your answer, because B becomes my given thing, and that is supposed to be my reduced sample space. So from my reduced sample space only I can answer, right? How? We want we want that common thing should be there. So sum greater than 9, we can see the sum greater than 9 is only happening in these two cases. So two cases out of these six possible outcomes. So logically, using the set this B only, I can write 2 by 6, which is your required answer. Again, I already mentioned if it is a one marker, please do use the logic and give the direct answer. No problem. But expect this at least say as a two marker. So in that case, these steps, the explanation is equally important in CBSE examination. So for that, you need to show the way I have written here. Check out this question. Assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. So that means my sample space would be boy, 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 girl, yeah, girl, boy, or girl, girl. So these are the four possibilities wherein I assumed that the first entry is representing the elder one and the second one is the younger one. Now, what is the conditional probability that both are girls? आपको probability किसकी निकालनी है? Both are girls. That is A क्या हो गया? जी जी. और गिवन क्या है? गिवन में मान लीजिए आई एम पिकिंग से सेकंड पार्ट. तो सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है? एट लीस्ट वन ऑफ देम इज गर्ल. At least one of them is girl. Of course, this will be my given thing and actually the reduced sample space. So logically अगर मैं बात करूं तो I have the direct answer. क्या हो जाएगा? One case is favoring out of three cases. Your required answer. And if I go for the formula approach, so that would be this. Now, A intersection B, one can easily observe GG. A intersection B, that is simply GG. So, one case out of four cases, and probability of B is three cases out of four cases. 1 over 3, as expected. कहीं भी डाउट आए तो प्लीज डू क्लैरिफाई. Check out this next question. Again, a very simple and basic question. An instructor has a question bank consisting of 300 easy true false. तो आप ऑब्जर्व करेंगे इजी की बात करी है,
ट्रू फॉल्स की बात करी है, तो ट्रू फॉल्स है इजी वाले, और 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स। सो यहाँ डिफिकल्ट वाले आ गए। तो इजी ट्रू फॉल्स कितने हैं? 300, डिफिकल्ट इज 200। 500 इजी एमसीक्यू, फिर बात कर ली गई है इजी एमसीक्यू 500 एंड 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन नॉन टू मी, राइट। अब क्या कह रहे हैं? If a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it is an easy question? Given that जो भी given है वो मेरा event B हो गया, क्या given है? It is MCQ। तो बेसिक आइडिया A इंटरसेक्शन B मतलब क्या हो गया? सिंपली इजी MCQ। तो वन कैन इजीली नोट, आपके पास टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? ये सारे क्वेश्चंस हैं 300 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 400, सो 9 12 1400। तो 1400 का क्वेश्चन बैंक है। तो अब इजी एमसीक्यू की जब आप बात करेंगे, गिवन दिस, तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड थिंग। और यहां सिंपल लॉजिक, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब इजी एमसीक्यू, इजी एमसीक्यू 500 है, तो रिक्वायर्ड इसकी प्रोबेबिलिटी ये हो गई। और व्हाट इज पी ऑफ बी? बी का मतलब ओनली एमसीक्यू। एमसीक्यू कितने थे? दैट यू कैन चेक इट आउट, 900 MCQs वर देयर। सो 500 by 900 विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। और वही अगर कंसेप्ट क्लियर हो रहा हो तो कुछ स्टूडेंट्स इसका आंसर शायद विदाउट इवन राइटिंग एंड सॉल्विंग डायरेक्ट सोच पा रहे हो, सिंगल स्टेप में, यूजिंग द लॉजिकल अप्रोच ऑलरेडी बीइंग डिस्कस्ड। तो ट्राई आउट टू थिंक इन दैट पर्टिकुलर वे कि लॉजिक से आप कैसे क्विकली इसको सोच पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक इट आउट कैसे करेंगे? डबलेट्स को छोड़ देंगे ना? यस, तो डबलेट छोड़ने का मतलब आपके 30 केसेस एक्चुअल में कंसीडर करने होंगे इन माय सैंपल स्पेस। 1/15। आंसर मुझे ऐसे तो याद नहीं है, वो तो देखना ही रहेगा। यस, गिवन टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन अ थ्रो ऑफ डाई आर डिफरेंट। तो ये चीज अब आपको गिवन है, तो चेक करिए ए और बी। बी एक्चुअल में मेरा गिवन वाला चीज हो गया, और आपको पता है इट कंटेन्स 30 एलिमेंट्स, वो मैं लिख नहीं रहा हूं। आपको पता है टोटल 36 में से वही 1 1 2 2 3 3 हटा देंगे। व्हाट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 4। सम इज 4 का मतलब क्या हो गया? ए क्या है मेरा इवेंट? 1 3, ओ सॉरी, हाँ सम 4 है, 1 3। 1/15 आ रहे सर। अच्छा ठीक है, 2 2 और 3 1। तो अब आप चेक कर लीजिए कॉमन इसमें क्या आ रहा होगा। दो केसेस कॉमन दिख रहे होंगे आपको। तो लॉजिकली मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये बनेगा ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी।
तो ए इंटरसेक्शन बी में आपको पता चल रहा है ये वाले दो केस कॉमन आ रहे हैं आउट ऑफ 36, और पी ऑफ बी, बी के अंदर 30 एलिमेंट्स थे आउट ऑफ 36। योर रिक्वायर्ड आंसर बिल्कुल ठीक 1/50। सो एक सिंपल कंसेप्ट को बस कैच करने की बात है। This is a little bit tricky and slightly different problem. पहले एक बार पढ़कर देखिए, देन आई विल डिस्कस द डिफरेंस। है ये कंडीशनल का ही एक्चुअली। So far, all the cases which we had considered, they were equally likely. The outcomes were equally likely. So they were elementary events. Now, what do you observe here? The events are not equally likely. How? Check this out. So this is the actual situation given to you. There is some condition even when initially tossing a coin. Okay, coin toss kara, I will get head or tail with the probabilities half and half. Further, if the coin shows head, अब head वाले केस में अलग केसेस हैं, then toss it again. Again toss करूंगा तो फिर से head आएगा या head tail आएगा, फिर इसकी प्योरिटी क्या हो गई, हाफ हाफ हो जाएगी। हेड आए तो ये वाला केस हो या ये वाला केस हो। आई होप दिस इज क्लियर। और फिर कह रहे हैं बट इफ इट शोज टेल, टेल आने पर थ्रो अ डाई, तो टेल आने पर डाई को थ्रो करा, तो ये 6 केसेस बनेंगे। कैन एनीवन टेल मी इनकी क्वालिटी क्या होगी? T1 के यहां क्या लिखूंगा इस लाइन के ऊपर? 1/2 into 1/6। 1/6। हाँ 1/6, ये तो अभी 1/6 है। चेक करिए हर एक, अब आपके पास ये तो इक्वली लाइकली ये वाले केसेस हैं, तो ये इन सभी का 1/6 1/6 1/6 एंड सो ऑन हो गया। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। बस अब क्या कह रहे हैं, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4। तो इसका मतलब नंबर ग्रेटर देन 4 में क्या क्या आ जाएगा, T5 आएगा एंड T6 वाला केस आ जाएगा। What is given? Given that there is at least one tail, at least one tail, so that would refer to tail दिखनी चाहिए। एक तो ये HT आ जाएगा और बाकी 6 के 6 ये वाले केसेस आ जाएंगे, क्योंकि एक टेल तो हर एक में ही आ रही है। सो T1 T2 T3 T4 T5 T6, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? ऑफ कोर्स ये दोनों ही केसेस इंटरसेक्शन में आ रहे हैं। अब जब हम बात करेंगे P ऑफ A बाई B निकालना है, दैट इज अ लॉजिकल थिंग। पहले यहां तक एसिमुलेट कीजिए, समझिए इस चीज को ध्यान से, तभी बेटर है आगे बढ़ना। आई एम वेटिंग, पहले इतना समझिए। फिर इंटरसेक्शन में टेल की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ बिल्कुल, वो भी करेंगे, बताता हूं आगे कैसे। यहां तक इवेंट्स को लिखना और ये डायग्राम को समझना, दैट इज सफिशिएंट। अब हम जब कह रहे हैं P ऑफ A बाई B, A इंटरसेक्शन B, तो चेक करिए इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, T5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो चेक करिए T5 डायरेक्टली नहीं आया होगा, 1/6 होने से पहले, इस T5 पर आने से पहले पिछला भी तो अफेक्ट रहा था कि टेल आया हो, और उसके आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/2।
तो T5 has actually got the probability half into फिर हो जाए 1/6। इसी तरह से T6 को अगर आप ध्यान से देखें, अगेन इट हैज गॉट द सेम प्रोबेबिलिटी, तो ये तो चलो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब जब मैं P ऑफ B की बात करूंगा, थिंक लॉजिकली, बी बी में से ये पहला केस जो है एच टी आने की प्रोबेबिलिटी कोई बता सकता है क्या हो जाएगी? 1/4। 1/4। यस, हाफ इंटू हाफ हो गया। प्लस में इफ आई नाउ कंसीडर T1 2 3 4 5 6, ऑल द 6 केसेस आर देयर, और हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ इंटू 1/6, और इस तरह के 6 केसेस आ गए हैं इंटू 6। सॉल्व इट, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। 2/9 आ गया सर। या वट एवर इज द आंसर, वही है, वो आप देख लीजिए, मुझे आंसर नहीं पता। इट्स ऑल अबाउट द सिंपल कैलकुलेशन नाउ, द कॉन्सेप्ट इज इम्पॉर्टेंट। सर हमने नीचे 1/2 इंटू 1/6 क्यों लिया? हम ये केस कौन सा लिया है? ये T1 से लेकर T6, तो एक T1 पे सिर्फ फोकस करो। T1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये वाला केस, ये कब होगा? 1/6 है। और ये वाला केस आने से पहले भी तो कोई कंडीशन है कि टेल आया होगा, और गेटिंग अ टेल हैज द प्रोबेबिलिटी 1/2। तो टेल आए और फिर 1 आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पहले टेल आने की एंड फिर 1 आने की, तो वो हाफ इंटू 1/6 हो जाएगा। 6 के 6 केसेस सिमिलर हैं, इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर नाउ। यस सर। ओके, चलो, in fact a very similar question, this one, ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा है। सो दैट इज इन योर होमवर्क। इन फैक्ट दीज वर द 3 क्वेश्चंस या 4 मैंने कहे थे आपको होमवर्क के लिए लास्ट टाइम। सो फर्स्ट 3 वर द फार्मूला बेस्ड, द फोर्थ वन वाज लिटिल बिट ट्रिकी प्रॉब्लम। नन ऑफ यू हैव सबमिटेड द सॉल्यूशन। नहीं, किसी एक का आया था, मुझे आंसर याद नहीं है सही था या गलत। Anyone has tried this fourth question? Anyone? आपकी क्लास से किसी ने किया था? हो सकता है 12th डी से भेजा हो, बिकॉज सिलेबस इज एक्चुअली पैरेलल। ओके, अगर आपने नहीं भेजा तो आई स्टिल टेक दिस एज अ ओपन प्रॉब्लम फॉर योर होमवर्क। प्लीज डू अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। Further, we will be now talking about another important concept known as independent events. This is based on your NCERT textbook exercise 13.2. As the name suggests, independent events, they are not dependent on each other. The happening of one event is not affecting the happening or non-happening of the another event. So they are actually working separately. Let's say for a job interview, there are 2 persons, Ram and Sham, they are appearing. So they are independently working. So they have their own qualifications to get selected, right? So they have the independent chances of being getting selected. So they are referred to as the independent events. To understand the concept of independent event, initially we need to begin with a very simple concept of multiplication theorem on probability. You will realize very soon that it's just the name which is twisted. Otherwise, we already have studied this concept.
How? Check this out. Let A and B be the two events associated with the sample space. Then we have P of A intersection B. ये फोकस यहां करिए इसके ऊपर, ये जो लिखा है. Let me just pick this, which is actually multiplication theorem of probability. And to understand this, consider the formula for P of B by A. याद करिए क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ चुके हैं ना, दिस और नीचे P of A आ जाएगा. You just cross multiply and you will get the above result. So only the presentation is being modified. Rest of the idea is actually based on the conditional probability only. In fact, I've given one question over here, which is very easy to understand. I think the question is readable. तो आप इसका आंसर सोचिए. ये 10th 11th में ही पढ़ चुके हैं, बस वो ये हमने फॉर्मल नाम नहीं दिया था. An urn contains 10 black ball. There is a urn, some container, 10 black balls and 5 white balls. Two balls are drawn from the urn one by one without replacement. So this is a very important condition, without replacement. And I'm sure every one of you know the difference between without replacement and with replacement. If nothing is mentioned in the question, it is always considered as without replacement. So while in without replacement, if one ball is drawn, we will just check out that ball and do not mix it again. We will keep that aside. So two things will happen. One, the probability of getting the same ball will be reduced, will not be there. Second, one ball will be lesser now in total balls. Let's understand problem से देखिए. फिर कह रहे हैं what is the probability that both drawn balls are black? To find both drawn balls are black. तो हम एक लॉजिक से बात करेंगे. आई विल नॉट गो इनटू द डेप्थ ऑफ द फार्मूला कि मैं फार्मूला को लिखूं और फिर करें. दिस इज अ सिंपल वन मार्कर सिचुएशन. तो बोथ आर ब्लैक. सोचिए जरा, पहली बॉल ब्लैक आए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट बॉल एज ब्लैक? एनीवन? 10C1. चलो मैं इसको कॉम्बिनेशन से भी बताऊंगा, बट आई विल पर्सनली ऑलवेज प्रेफर टू अवॉइड कॉम्बिनेशन. विदाउट रिप्लेसमेंट है, डेफिनेटली आई 10/15. यस, मैं परमुटे उस कॉम्बिनेशन लगा सकता हूं, बट अवॉइड करिए, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएंगे. सो फर्स्ट बॉल ब्लैक आए 10/15. अब 9/14. गुड. अब 9/14. एक ब्लैक बॉल कम हो गई थी और टोटल सेट में से एक बॉल भी कम हो गई थी, तो नेक्स्ट आ जाएगा 9/14. अब हार्डली मैटर, टू बॉल्स ड्रॉ करवाई थी, मैं कह रहा हूं इसकी जगह आपको अगर ये भी दे देते कि 4 बॉल्स को ड्रॉ करा है, तब आंसर क्या होता? ब्लैक की बात हो रही है. Into 8/13 into 7/12. 9/14, 8/13, 7/12. That would be your required answer. तो अगर दो बॉल का कंसेप्ट क्लियर है तो आप 3 हो, 4 हो, 5 हो, इट एक्चुअली डजंट मेक एनी डिफरेंस. कॉम्बिनेशन से तो 10C2 अपॉन में 15C2 आएगा ना. हाँ, अब मैं आता हूँ, चलो कॉम्बिनेशन पे. ब्लैक बॉल आए आउट ऑफ 2 बॉल्स, 10C2 बिल्कुल सही, और टोटल 15 में से कोई भी 2 बॉल्स आ जाएं, तो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस इट विल बी एक्चुअली दिस ओनली. तो वो ये ना, कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला है, कैलकुलेशन थोड़ी सी इंवॉल्व हो जाती है, विच इज ऑफ कोर्स नॉट मच डिफिकल्ट. यू कैन डू दैट आल्सो,
but let's avoid it if possible. If it is the question of with replacement, सेम सिचुएशन, और अब आप सोचिए अगर मैं इसमें ये लिख देता हूं कि ये था विद रिप्लेसमेंट, सो व्हाट विल बी द डिफरेंस, व्हाट विल बी द आंसर? 10 by 10 by 15? 15 into 10 by 15. यस, विद रिप्लेसमेंट। सेम बॉल मैंने फिर से मिक्स कर दी बैग में, एंड वो बॉल दोबारा से आ सकती है, इसीलिए उसकी प्रोबेबिलिटी भी काउंट होगी। तो 10 by 15 इंटू 10 by 50 आंसर। सो दिस सिंपली मीन्स कि अगर ये केस होगा विद रिप्लेसमेंट का, कॉम्बिनेशन कैन नॉट बी यूज्ड। तब तो आपको बिल्कुल लॉजिकली ऐसे ही करना रहेगा। Let me consider, I think, one more question I have picked, having a direct answer. And है विदाउट रिप्लेसमेंट का, फिर भी कॉम्बिनेशन से मैं नहीं सोचूंगा। 3 cards are drawn 1 from by a well. 13 का क्यूब। Okay, कह रहे हैं okay, what is the variety? First two are kings and third is ace. आप बताइए फर्स्ट किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4 by 52। इनटू 3 4 by by 50। 51 ये तो किंग की into होगी। 4 by 50. एस 4 होते हैं, और कार्ड एक और कम हो चुका है, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ऑफ कोर्स आप इसकी कैलकुलेशन वगैरह तो ठीक है वो सॉल्व कर ही लेंगे, बट मेन है कंसेप्ट। चाहे 3 लाइंस में क्वेश्चन दिया है, कंसेप्ट क्लियर है तो सिंगल लाइन में यू कैन आंसर इट। इट इज नॉट द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन विच मेक्स अ डिफरेंस। Now, just the introduction to the independent events and its formula. Problems will be considered in the next class. So, two events A and B are said to be independent if P of A by B is P of A, or P of B by A is P of B. One have to think logically. आप चेक करिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मैंने क्या सीखा था कि ये क्या होता है, इसके इक्वल होता है। अगर कोई कंडीशन है, अब इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या हो गया? पी ये ए जो चीज क्रॉस। P गिवन होता था इस वाले केस में, पर अब मैंने कहा जब इंडिपेंडेंट हैं तो B का होना या नहीं होना, उससे तो A को फर्क ही नहीं पड़ता है। तो P of A by B will actually become only P of A. B गिवन था, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? इट इज नॉट अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ A. तो A by B will take the form only P of A. ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप तो P of A इंटू P of B is P of A intersection B, which gives me the method to check whether the given two events are independent or not. So if A and B are independent, then their intersection would be simply P of A into P of B, and conversely, vice versa. If this result holds true, then the events must be independent. So, for a problem solving point of view, you just need to learn this particular formula. Questions are very simple, but they will require a logic, और लॉजिक हो सकता है सिक्स्थ का बच्चा इसमें आपसे बेटर सोच ले। दैट इज अ ट्रू फैक्ट हियर,
क्योंकि सिंपल सिंपल यहाँ मैं जो क्वेश्चंस लेने वाला हूँ लॉजिक डिमांड करेंगे, नॉट द टफ काइंड ऑफ अ मैथमेटिक्स एज सच. यू विल रियलाइज दैट वेरी सून. तो एनीवे, ये प्रूफ जो मैंने एक तरह से बेसिक दिखाया, इट इज शोन ओवर हेयर. कैसे करते हैं. और फॉर 3 इवेंट्स, ये मैं भूल गया था कि मैंने ये स्लाइड में यहाँ रखा हुआ है. एक इसको भी पढ़कर देख लीजिए, विजिबल हो ही रहा है वैसे. For 3 events A, B, and C, they are said to be independent if they are mutually independent. और चेक करिए, I have mentioned 4 different conditions. A intersection B का probability P of A into P of B होगा. ऐसे ही A C होने चाहिए independent, B C होने चाहिए independent, and also finally A intersection B intersection C, that should be also P of A into P of B into P of C. All 4 conditions if hold simultaneously true, then only we say that the 3 events are independent. That's the last result. If E and F are independent, then E dash, या जिसको हमने क्या दिया था नोटेशन, नॉट E. तो नॉट E and F are also independent. E dash and F dash are also independent. और इसके साथ ही मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि E and F dash are independent. I will consider the proof of this also in the next class, क्योंकि इसका प्रूफ जो है वो बोर्ड में 2-3 बार एज अ 2 मार्कर पूछा गया है. सो बहुत कम रिजल्ट्स हैं जिनके हमने एक तरह से थियोरेटिकल प्रूफ्स की बात करेंगे. दिस इज वन ऑफ देम. You may consider as your homework if you can prove it without my being explaining it. If you have any doubt, please do let me know. सो होमवर्क तो एक कंडीशनल वाला आ गया, और इसका प्रूफ जो है वो आप होमवर्क में ट्राई करके देखिए अगर आप कुछ सोच पाए. और यू मे यूज सम रेफरेंस बुक्स आल्सो, दैट हार्डली मैटर्स. Okay, चलिए, then I am ending the class. If you have no doubt, you can leave the meeting now. Yes, please leave the meeting. I'm still waiting. It doesn't give a good impression every time. Karthik, I'm forced to remove now Karthik, Srishti, Sunidhi, and Yuvraj.